बहुत खुशी की बात मैं लोगों को देख रहा हूँ। लोगों की जिज्ञासा है जानने के लिए, और सत्संग से बहुत कुछ हमें मिल सकता है। हम लोग जो हैं, जितने प्राणी हैं संसार के, मनुष्य योनि जो है, इनमें काफी ज्ञान है, कम बेसी, पर पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए हम अल्पज्ञ हैं। ईश्वर के पास अनंत ज्ञान है, इसलिए उसे सर्वयज्ञ कहते हैं। आज आचार्य जी उसी श्रृंखला को चलाते हुए गीता के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। और इससे स्टार्ट करने से पहले सबसे मेरा रिक्वेस्ट एक है कि आप सभी अपने वीडियो ऑन करके रखें। तो बहुत लोगों से हम परिचित हैं, बहुत से नहीं हैं। हम एक दूसरे से परिचित हो सकते हैं। अच्छा हो यहाँ तक अगर आप ऑन करके रखेंगे, आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन कुछ हमें सभी को एक दूसरे से भावना सद्भावना मिलेगा। तो ये आग्रह है। आचार्य जी, अब शुरुआत करें आप। ओम। सभी को सादर नमस्ते। और इस सत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आर्य समाज मरखाम की ओर से हम अपने ध्यान अवस्थित करने के लिए सीधे बैठेंगे। कोमलता से आंखें को बंद करके लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। 3 बार प्रणव ध्वनि सर्वव्यापक सर्वज्ञ न्यायकारी दयालु ईश्वर का मुख्य निजाम ओम का जाप करेंगे। Let's sit down straight with the eyes gently closed, body relaxed. Deep inhale and exhale. And while exhaling, chant Om, feeling the vibrations of your own chanting, and just be relaxed and focused. Om. 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 Some moments of silence. दोनों हथेलियों को मिलाकर के धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को पलकते हुए हथेलियों के नीचे करेंगे। एक बार फिर से सभी का स्वागत। गत बार गीता के दूसरे अध्याय के लगभग मध्य भाग में पहुंच गए थे और अंतिम श्लोक वो था, सुखे दुखे मम समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम बुद्धि रखें। Be level-headed, equanimity, whatever be the circumstances, whether it's pleasure or pain, joy or sorrow, profit or loss,
or victory or defeat. दूसरे अध्याय में, जिसको हम सांख्य से ज्यादा जानते हैं, सांख्य शब्द का एक बार दोबारा विस्तार कर देता हूं। जो विषय है उसको एक एक करके खुलासा देना, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशंस, वो सांख्य है। बुलेट पॉइंट एक्सप्लेनेशंस। आजकल हम पावर पॉइंट करते हैं तो बुलेट पॉइंट पावर प्रेजेंटेशन करते हैं, बुलेट 1 2 3 4 वैसे ही है। नथिंग मोर देन दैट, एक्सप्लेनिंग द नॉलेज इन वेरी सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल वे। यहाँ तक जब हम आ गए थे तो अर्जुन अपनी दुर्बल बुद्धि, जो मोह के कारण दुर्बल हुआ, जिज्ञासु की तरह श्री कृष्ण जी से संवाद कर रहे हैं। अर्जुन with the unbalanced state of mind, as a seeker of knowledge, humbly engages into question and answers with Shri Krishna. और वहां पे क्या बताया गया कि आत्मा जो है अजर अमर है। आत्मा की कभी जन्म या मरण नहीं होता है। आत्मा तन को धारण करता है जैसे हम कपड़े के परिवर्तन करते हैं। और शरीर की क्या अवस्था है? बाल्यपन, यौवन, जरा अवस्था। So the soul never born nor dies. It's the body, the soul leaving the body, just as we discard worn out clothes and wear new ones. And know the characteristics of the body, born as a baby, growing into a child, then youth, and the stage of maturity after that decline. Then telling us that just chasing the senses, इंद्रियों के पीछे भागना, इंद्रियों के विषय भाग के पीछे भागना, उसमें तो जरूर सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, और वो चक्कर में पीसते रहेंगे. So if we are chasing the objects of the senses, obviously we are going to be in the cycle of pains and sorrows, followed by pleasure, joy, again pain and sorrows. It will go on like this eternal. And the world has been going like this forever. And if we go into that, how do we realize long-term happiness? हम जो आत्मा अजर अमर है, अजन्मा है, अमर है, लंबे काल, चीर काल तक सुख प्राप्त करने के लिए हमारे क्या मार्ग है? एक तो इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें तीव्र वेग की जो गति है उसको रोकना है. Chasing this object of the senses with immoderation. So moderation is one key to starting on the path of looking for long-term happiness. Remember, हम प्यासे हैं
एक गिलास पानी या कुछ भी पी लेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद दोबारा प्यास। सो दैट इज द साइकिल। भूख है, खाना खा लिए, 4-6 घंटे के बाद दोबारा भूख। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, वैसा ही चक्कर चलता है। आत्मा जो है उससे बस ये शरीर जो है उसका अवलोकन कर सकता है। उस शरीर को भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि महसूस होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न उसको भूख है, न उसको प्यास। आत्मा नित्य है, दूसरे चीजों से घुलता मिलता नहीं है, इस शरीर से भी घुलता मिलता नहीं है। Doesn't mix up, it doesn't muddle with other things, it has its own entity, not even with this body. The body is only a tool for the soul to go on the path of spiritual progress. लंबे चीर काल तक ईश्वर के सुख भोगने के लिए है, और जो जन्म लिया उसका मरना निश्चित है। तो फिर ये सामने वाले खरे जो गुरु आचार्य आदि हैं, इनके मरने पे शोक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर का दुरुपयोग करके या गलत पक्ष के साथ खड़े होकर के युद्ध करने के लिए तैयार है। ये मरें या मारे जाएंगे, इस पे कोई शोक चिंता नहीं करना है। कृष्ण अर्जुन जी को पुश कर रहे हैं कि तुम अपने स्वधर्म स्वकर्म के लिए डटे रहना, ये दुर्बल बुद्धि को छोड़ो, अपने साम्य अवस्था पे चले आओ। कम टू द बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, एनालाइज दिस केयरफुली and do your duty, your swadharma and swakarma as a kshatriya, as a someone who has the duty to protect dharma and protect the state. और ये योग विद्या से पूरे मिले जुले हुए। अगला श्लोक वो कर्म पर आधारित है। It now focuses on कर्म। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वेमां शृणु बुद्धया युक्ता यथा पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे अर्जुन, बुद्धि के विषय में, योग के विषय में अब सुनो। How to come to the balance of the mind. अर्जुन न्याय की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में खड़े हुए, to protect righteousness and to, as we say, weed off the wrong parties, उसको उखाड़ने के लिए। ये कोई नया ज्ञान नहीं। It goes in the sense of dharma rakshati rakshita. Stand for dharma, dharma will protect you. सत्य सदाचार के मार्ग पर चलना अति सरल है। बस बुद्धि को ठीक विषय में लगा करके चिंतन करके फिर सत्य और सदाचार के जो मार्ग है, सत्याचरण के जो मार्ग है, उस पे चलना सरल हो जाता है। We need just to be focused and apply our mind in that direction. इधर उधर मन को घुमाते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, then हमें लक्ष्य जो है वो दिखाई नहीं देगा। It becomes blurred.
फिर धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. It goes on. ये जो आपके सामने युद्ध की जो दुविधा है, that is also धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. धर्म के लिए इसको एक यज्ञ स्वरूप समझ करके करें. यज्ञ रूप किस लिए? पूरे समाज के रक्षा के लिए ये क्रिया है. पग पग पर प्रयत्न पूर्वक इस युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए चलोगे तो ये महान कर्म है और ये महान भय जो तुम्हारे दिमाग में आया है वो भी दूर हो जाएगा. So understanding the principles that this is a dharma yuddh, a war to reestablish righteousness. Then it says buddhayo vyavasayanam. कर्म योगी के कर्तव्य है कर्म पालन करने का, कर्म पलायन नहीं. So if the mind is applied in the proper direction, the karma yogi will only follow the path of doing his karma and not shy away from these duties and responsibilities. Then it says, Yamimam pushpitam vacham pravandatya vipaschita vedavadarata partham nanyadastiti vadina. Hey Arjun, Vivek Shunya, बस मंत्र पढ़ करके क्रिया कर लें, कुछ कुछ ठीक है, लेकिन असली काम जो है और उसका सफलता पूर्वक हम कर पाएंगे जब पूरे विवेक पूर्वक, that is applying wisdom to that. And the example is when we are studying the Vedas, just reading the mantras and not understanding them, not applying them in life, that doesn't bring much to our life. The full depth and the goals are attained only when we start gradually understanding and unfold the knowledge into our life. This is wisdom. कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रयति. कामनाओं से आसक्त, be detached with desires and wishes, the sense of selfless karma, nishkam karma. Why? It's not a question that कर्म फल हमें नहीं मिलेगा, वो यथोचित समय पे हमें जरूर मिलेगा. But then अगर कर्म के फल पर हम आसक्त हो गए and waiting for that, then we can't see forward and moving forward ahead in our life because we'll be waiting for the results. And then getting attached to the results, the clarity of mind also doesn't come forward. So if we just keep doing our karma, the fruits of the karma or karma phal, it goes like that. We'll come in due time, we'll continue our path, we'll continue our journey.
It's just like when we are driving to a long distance destination, so many small things we see, but we continue our path. We are not disturbed by these. कामनाओं से आसक्त, कर्म के फल में आसक्त न होना is the same thing. Just continue your path. Then it says, Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nirdvando Nitya Sattvastho Niryoga Atmavan. वेद में त्रिगुण विस्तार पूर्वक से बताया गया है. त्रिगुणा सत्व रजतम. Nirdvando, unaffected by the inconsistencies like pain and sorrows, by heat and cold. द्वंद्वों को सहना. Nitya Sattvastho, then our mind will go on this sattvic state. And when the mind goes on that sattvic state, we'll have no doubt, we'll be clear on the path of upholding our duties and responsibilities. Yoga Kshema will realize our goals. Yavanartham updapani sarvatra samplutodake tavan sarvesho vedesho brahmanya vijanata. It says, Hey Arjun, वेदवादियों की दुर्दशा बताई गई. Those who just chant the mantras without understanding, without knowing, they don't get the optimum results. It's like you have a mirror which is covered with dust. You can't see your own image properly. अक्षर और मात्रा में तत्व भरा हुआ है, इसलिए जानो, अर्थ भी जानो. So on the path of karma, we need to understand what are our duties and responsibilities also. Then it will come with that true knowledge. Sattvika dhyan will be like वो घड़ा जो है पानी भर गया और उसमें ओवरफ्लो हो रहा है. उस स्थिति में will be all full with the knowledge, and we know what we have to do. That is one state. And it's the state where we realize that the teachings of God, the guidance, the instructions of God are very important in our life. Then the famous shloka comes, Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala heturbhuma te sangostva karmani. Very famous shloka. Karma karne ka adhikar हम में है. We have the free will to do our actions. लेकिन फल चुनने में हमारा कोई अधिकार नहीं. भगवान ने कर्म फल की जो व्यवस्था बना दी, it's like the software which is programmed to do certain actions. And it won't diverge, it won't budge against that order which has been given by the programmers. वैसा ही ईश्वर के कर्म फल की व्यवस्था है. माँ कर्म फले हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि
कर्म करते जाओ, and the results, the outcome will come in the due time. You have the free will to choose what to do, whether to engage in right or wrong. This is what Sri Krishna is telling Arjuna. But then be careful. And it flows into that knowledge. It's the analytical mind which is going to lead us to what we need to do. Yogastha kuru karmani sangatva dhananjaya siddhi siddhayo samo bhutva samatvam yoga uchyate. Yogastha, आत्म संयम द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं। उसमें धैर्य धारण करना है, लंबे काल तक अभ्यास करते रहना है, फिर सिद्धि को प्राप्त करेंगे। इट्स नॉट, जैसे कहता ना चुटकी बजा करके, इट्स नॉट at within seconds. We need long practice. असिद्धि के समय में निराश न होना चाहिए. So when we've not attained our objective, we shouldn't be discouraged. We need to persevere. करते रहना चाहिए, डट करके चलते जाना चाहिए. और बुद्ध फिर समा भूत्वा समत्वम योग उच्यते. We need to be level-headed, keep equanimity, बुद्धि की सम अवस्था हम बनाए रखेंगे तो रास्ता क्लियर. बुद्धौ शरणं मिन्वच्छ कृपणः फलहितवः. भोग ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य को कर्म, बुद्धि, योग आदि से बहुत दूर पीछे. If we are looking only about these sensual pleasures, bhog aishwarya, material pleasures, then we are far away. We are distancing ourselves from the state of yoga, equanimity, and then we are also departing from the goals of life. Again, repeating the same thing. Buddhi yukto jahatiha ubhe sukrita dushkrite tasmad yogaya yujyasva yoga karmasu kaushalam. That is very beautiful shlok again. Buddhi yukt manushya. इस संसार में सुकर्म और दुष्कर्म दोनों प्रकार के कर्मों में आसक्ति को छोड़ देता है. So the one who has that stable, balanced mind is able to make the difference, and then he is neither affected nor infatuated in karma. Whether the karma is good or bad, but he just come to the state of mind and be able to make the right choice. Karma jam buddhi yukta hi phalam. It goes like that. Janma bandha vinirmukta padam. It's going to talk about this cycle of birth and death. And the example is given punarjanma, pap, punya. That is the cycle of it.
कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्वा मनीषीणः। जिसको हम भाग्य बोलते हैं वो हमारे किए हुए कर्म, जिसको हम संचित कर्म है, the karma brought forward, carried forward from previous janmas, previous birth. This is our real destiny. And the more we are engrossed in that, the more we stay away from the sense of selfless karma, just engage attached to all these, the more we'll get entangled in the cycle of janma maran. बंधन से मुक्त होकर रोग शोक से रहित परम पद को प्राप्त करते हैं कौन? जो बुद्धि को सम अवस्था और जैसे कि बताया गया है, श्लोक ने बताया है, कर्मण्येवाधिकार ते मा फलेषु कदाचन. So that same knowledge again repeated to lay emphasis and to lead Arjun to the right decision. Then yada te moha kalilam buddhir vyati tarishyati tada gantami nirvedam shrotavyasya shrotasya cha. अनासक्त योग के बल से बुद्धि मोह रूप दलदल से ऊपर उठ जाता है, उसको पार कर लेता है. अब हे अर्जुन, स्वजन के मोह से तुम पार करके अपने छात्र धर्म का पालन कर और बुद्धि उदय होगी. Telling Arjun, move out of the relationships which are thoughts of about relationships in which you are entangled. And these thoughts have led an imbalance to your mind. Remove all these. Think of your duty as a Kshatriya, as a prince. And you have the duty to protect Dharma and to protect the country, to put it back on the path of righteousness. And if you go on that path, this is Dharma ka palan. Doing your duties. And you'll find the more you go on this line of thought, the more you'll have clarity of mind to go ahead. And this is where we find at the end of the Gita, in the 18th chapter, when Arjuna has followed the guide, he has listened to the guidance, and Shri Krishna tells him, इस ज्ञान को अब तुम मनन चिंतन करके अपने निर्णय पे आ जाओ. Analyze the knowledge I have given to you, contemplate on that, and take your decision. And the decision comes from Arjuna, Nashto moha smriti labdha adi adi. Gata sandeha karishye vachanam tava. Smriti labdha. Nashta moha smriti labdha. That moh, that infatuation about relationship now is destroyed. His memory, his mind is now clear. And then all the doubts cleared, he's prepared to go ahead on his dharma and karma. So buddhi ki chanchalta se rahit, that is with an unwavering state of mind, this is where we get clarity. And that clarity we need, it says, Drita Vrata Kshatriya
यज्ञ निष्कृतो बृहद्दिवा। सो वृत्रासुर के वध के समय में छात्र धर्म का व्रत धारण किए हुए। So when it's talking about Vritrasura, Asura, in that sense, the imbalanced or unbalanced mind, this is also the Asura sthiti. क्यों? क्योंकि हमारे कर्म करने का जो मार्ग है वो बिल्कुल उस पे पर्दा ला देता है। That's why it's called Asura Vritti. And for that, we need to shed all those attachments, all those links that we tend to cling to and just move ahead in life. And then the wavering thoughts will just subside. और योग क्या कहता है? योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा. Stop the activities of the fluctuating mind. And this is where Krishna is driving Arjuna towards clarity of mind. Then it comes to now a very important subject which Arjuna is inquiring about. Sthita prajyasya kabhasha samadhistha keshava sthita kin prabhasheta kimasit vrajet kim. समाधि की अवस्था, समाधि प्राप्त होगी, उस स्थिति को स्थित प्रज्ञा, वहां पे मनुष्य कैसे आचरण करता है, कैसे बोलता है, कैसे विचार करता है, किस प्रकार का जीवन ले जाता है. That is very important. And then you'll see that whatever we say about Sankhya, Karma, Jnana, Bhakti, these are not isolated compartments of the Gita. It's all a puzzle, and when we merge them, we get the broader picture. If you take only one piece of the puzzle, unfortunately, you lose sight of the wider or the broader picture. That's a very right analogy in that circumstances. Then Krishna continues, Sri Krishna continues on describing that. Prajahita yadha kamanastva kamanas sarvan partham manogatam atmanyevatmana doshta sthita pradyastadochyate. Sthit prajya, that is the stable mind. This is the first characteristic. Then it goes on continuing. Atma santosh, atmanyeva atmana dushta. That is, be content. And we see always that when we are not content with what we have, instead of being happy for the things that we have in life, we remain unhappy for the things that we don't have in life. Dukheshvano dvikam namana sukheshu vigat spriya vitaragabhya bhaya krodha sthita dhirmo nirruchyate. मनुष्य अपने अंदर संतोष ढूंढता रहता है, और परोपकार कब करता है? जब ईश्वर का आज्ञा का पालन करता है.
और परोपकार करने में संतुष्टि उसको जल्दी मिलता है. So when we go into, as we say, the inner journey, looking for contentment, we'll discover the best way of attaining that is by paropkar, doing beneficial and benevolent actions for the welfare of all. यह सर्वत्रानभिघ्नेश हस्तत प्राप्य शुभाशुभम नाभिर्नन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता. शुभ अशुभ, that is those which lead to good or bad. शुभ से आदमी जो है फूलता है. We tend to grow our own image when we do good. And when things don't go so good or bad, then we become unhappy. We lose santushti, we lose the sense of contentment. That is not the pradyasthit, the balanced mind. Because it says, just like the tortoise, the shell is hard, and to protect itself, what does it do? It withdraws within the shell. और जब भी हमें दुख की अवस्था दिखाई देता है, हम वैसे ही इंद्रियों को अपने अंदर, बाहर लूस न छोड़े, अपने अंदर लाने के लिए प्रयास करें. That is pratyahar in yoga. And if we go into that, we'll have time, instead of being affected by the situation that hasn't gone to our satisfaction, we'll be more focused on analyzing what went wrong and how we should remedy to that. Next look, it says, Rasavarjam rasopyasya param drishtatva nivartate. Now a very important subject is coming. How do we go on the withdrawal of the senses? We know the word vrat. Hum vrat shabda kai baar sunte hain. व्रत क्या है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा निराहार रहने के लिए हम प्रयास करें, which is known as intermittent fasting, but not शरीर को गलाना सराना नहीं है व्रत के नाम से. That is going to make us have control on the primordial sense which lead us to wrong, the sense of taste. And we know Bhishma, Dronacharya आदि इनके क्या दुविधा थे? दुर्योधन के नमक के प्रति ऋणी थे. उन्होंने इनके भोजन स्वीकार करके उनके ऋणी बन गए थे. And look at the world of today. All the great scams are always planned around lunch and dinners, business lunch and business dinners. क्यों? क्योंकि व्यक्ति को वहीं ऋणी बना देते हैं. It's the same strategy of Duryodhan with Bhishma Pitamaha, Dronacharya, Kripacharya and the others. The world is still running that in one way, not taking into consideration the teaching of the Gita. So इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने के का पहला कदम रसना इंद्रिय पे काबू रखना. Control of the
taste buds. और उसके कंट्रोल करने से gradually the other senses come into control. So this is no new knowledge again. Ved, Upanishad, Darshan, Shastra, Gita is going in the same line. There's no contradiction. हाँ, हम जिस तरह से व्रत रखते हैं, we keep the fasting, but then we are craving when that time will end and we'll enjoy the food. Is that really fasting? We are still chasing the senses, the taste buds. कि व्रत रख रहे हैं, but then when the time will come to break that fast. So इसलिए हम व्रत रखते हैं और उसके फल हमें प्राप्त नहीं होते. Because mentally we are not on vrat, we are only physically on that. We need to unite both of them, and uniting both of them, yog, yud, yani join, yog. That is the meaning of that. Tani sarvani sanyamya yukta asita matparaha vasho hi yasyendriyani tasya praja pratisthita. This is shlok which we need to understand carefully. Matparaha is usually referred to, Krishna keh raha hai, mere prati samarpit ho jao. This is the usual understanding. Here Krishna stands as the guide, Guru jaisa, margdarshan karne ke liye, uske avidya ko dur karne ke liye. Remember, Guru is the one who dispels the darkness. So Krishna ji ki real sense of this shlok, मैं भी प्रभु भक्त हूं, मैं रात दिन उसी का ध्यान करता हूं. तानी सर्वाणी संयम्य युक्ता आसिता. आसित, that is, I am doing my upasana. मेरे गुरु जैसा कहता है, मेरे अनुकरण करो. Just do like I do. Surrender yourself in that Prabhu Bhakti. That is, follow the guidance, the instructions of God. हमने क्या किए? In fact, हमें उस विद्या के प्रति समर्पण होना चाहिए. हमने क्या किया? चित्र को पर ज्यादा बल दे दिया, चरित्र पर कम. In fact, it should have been the reverse. चरित्र को हम समझेंगे, फिर हम सही भक्त, उसके आधार पे हम अपने आचरण करेंगे तो हम भक्त बनेंगे. One question to leave your mind boggling. Anywhere in the Mahabharata have you seen Arjun, जो श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, कि उसने श्री कृष्ण जी के आरती किए या कुछ चढ़ावा दिए? नहीं. उसने बस उस ज्ञान के प्रति अपने आप को समर्पित किए और उसके आधार पे आचरण करने के लिए जब उन्होंने कहा कि ज्ञान को मैं समझ लिया, मेरे डाउट्स क्लियर हो गए, अब कर्म करने के लिए मैं तैयार हूं. That is the real समर्पण भावना, and this is the real bhakti. जैसे गुरु कहता है मेरे अनुकरण करो, the teacher of meditation will say, okay, just do as I do. You'll engage into meditation. लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल के ज्यादा गुरु क्या कहते हैं? ज्ञान को छोड़ो, बस मेरे शब्दों पे या मुझे ही भक्त ईश्वर के स्वरूप मान करके
आगे चलो. This is where we go wrong. When it's saying Tani sarvani sanyamya yukta asita matparah vashehi yasyendriyani tasya prajya pratisthita. हे अर्जुन, मैं भी रात दिन प्रभु भक्त की तरह ध्यान में रहता हूं. इसलिए यदि तू मुझसे प्रेम करता है, मेरे भक्त हो, तो बस मेरा अनुकरण करो. Just follow that and do that. जीवन में जब हम बाल्यावस्था में है, when we are still kids, we just do like that when our parents tell us to do things. And this is the best way we've learned about good, righteous behavior. Bringing that knowledge practical in daily life. गुरु हमेशा शिष्यों को वही उपदेश आदेश करता है और श्री कृष्ण जी वही कर रहा है. अगर उस मार्ग पे चलेंगे तो क्या होगा? ध्यायतो विषयांस पुंस संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते. फिर इंद्रियों के विषय पर कम ध्यान दे करके हम कर्म में आसक्त न होकर के आगे बढ़ेंगे. क्रोध भी न उत्पन्न होगा. बाधाओं के ऊपर उठ करके या उसको पार करके हम आगे बढ़ेंगे. क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिर्वै ब्रह्म स्मृतिर्भ्रंश बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रपाश्यति. In simple words, vinash kale viparit buddhi. So when we engage into anger, we lose our balanced mind, or we are infatuated with things, we lose our balanced mind. And when we lose the balance of mind, buddhi nasho, buddhir nashat pranashyati. We go on the path of decline. We are left with about 10 shlokas in this chapter, but I'll prefer to put a pause here for today and probably take a few questions if you have them.